Hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Energy Test Prep. This is Ashi Agarwal. I hope you all are doing great. So, in today's session, we are going to discuss all about law of torts. So, the first thing that comes to in our mind is what is tort? Let me tell you one thing. Law of torts is basically a branch of civil law. अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि ये सिविल लॉ क्या है. So let's discuss it. We have basically two categories of law. The first one is the civil law and the second one is the criminal law. अब let's discuss the point of differences between both of them. So, civil law. अब कोई क्यों जाके केस फाइल करेगा? Because something has been done, right? So, under civil law, an act for which a case is filed is called as a wrong. And that wrong can be either in the form of breach of duty or that wrong can be a violation of someone's legal right. Whereas under criminal law, an act for which the case is filed is a crime or an offense. And let's discuss the second point of difference. So, under civil law, the law concerns the individuals basically because it deals with disputes between the individuals. For example, under law of contract, we have two parties, right? Two parties together form a contract. So if one of the party makes a breach of the duty that has been mentioned under that contract, then the dispute arises between those two individuals only. Whereas criminal law में क्या होता है? Criminal law affects basically a public at large. For example, a murder has been committed. Therefore, the public and the society at large has been affected. The third point of difference comes in the form of remedy. अब सिविल लॉ में क्या रेमेडी होती है? द पार्टी अगेंस्ट whom the wrong is committed, so he can claim damages, and damages means compensation under the civil law. Whereas under criminal law, remedy किस फॉर्म में होती है? Under criminal law, the remedy is in the form of punishment. एग्जाम्पल लेते हैं. सिविल लॉ के एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टॉर्ट. breach of contract, that is dealt under the Indian Contract Act, and the property laws. So these are the point of differences. Criminal law के examples लेते हैं. The criminal law examples include murder, theft, domestic violence. These all are the examples of criminal law. Moving ahead and coming back to our topic, what is tort? So, tort has been derived from a Latin term, tortum, which means to twist. What twist? Twist the rights of an individual, which in general parlance means a wrong. Therefore, tortious act is committed to that violates the legal right of the individual. So tort क्या है basically? Tort में क्या हो रहा है? There are two persons. The one person is infringing the right of the other, and that other person has remedy under law of torts to claim compensation. For example, violating someone's reputation. ये किस टॉर्ट के अंदर डिफाइंड है? दैट इज कंसिडर्ड एज अ टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर से वायलेटिंग समवंस राइट टू पोजेशन. आप गए किसी के लैंड पे एंड विदाउट देयर परमिशन, सो दैट विल अमाउंट टू टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास. So that is basically what tort means. Now next comes the legal terminologies. अब क्योंकि हम टॉर्ट पढ़ रहे हैं तो देयर आर दीज थ्री टर्म्स विच विल कम अगेन एंड अगेन. सो लेट्स डिस्कस इट. द फर्स्ट वन इज द tortfeasor. Tortfeasor is defined as the person who commits a tort. अब जो पर्सन उस रॉन्ग को कमिट कर रहा है, द पर्सन हु इज एट द रॉन्ग साइड, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज tortfeasor.
because in the court of law that person has been found to be at the wrong side. उसका जो गिल्ट था, उसका जो रॉन्ग डूइंग थी, दैट हैज बीन प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. The next terminology is the plaintiff. Plaintiff कौन है? अब now the plaintiff is the person basically who files a case. क्यों फाइल कर रहा है वो केस को? क्यों फाइल कर रहा है वो एक प्लेन को? बिकॉज दैट पर्सन हैज बीन रॉन्ग्ड. उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, इसलिए वो प्लेंटिव जो है कोर्ट में जाके एक प्लेन फाइल करता है, इसलिए उसको हम प्लेंटिव बोलते हैं. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द डिफेंडेंट. अब डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट इज बेसिकली दैट पर्सन अगेंस्ट whom the plaint has been brought. Maybe he will prove to be a tortfeasor or not. That is a question of law and that has to be resolved in a court of law. जब प्लेंटिफ प्लेन को फाइल करके कोर्ट में जाएगा, द डिफेंडेंट विल पुट ऑन हिज और हर डिफेंस. If he is proved to be guilty by the court, then that defendant will become a tortfeasor because a tortious act has been committed by him. So these three terms are to be used again and again in law of torts. Moving further, tort is basically an uncodified form of law. अब ये uncodified form of law क्यों है? So basically we have two forms of law. One is the codified one and the second one is the uncodified form of law. अब codified form को पढ़ते हैं पहले. तो codified form basically वो form है law की जहां पर law एक particular statute में defined है. For example, Indian Penal Code. For example, Indian Contract Act. All these forms of law are codified in nature because they all are described in a particular statute. They are all codified in nature. Whereas uncodified form of law means those laws that have not been stated in a particular statute. तो ये कहाँ से आए? बेसिकली ये आते हैं हमारी कॉमन लॉ प्रिंसिपल से और द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स. So basically tort has been brought from the common law principles that is considered to be a judge made law. Judicial precedent किसको कहते हैं हम? ऐसे judgments जो कि already pre-decided हैं based on the particular law on the similar set of facts that come into picture. So tort क्या है? Tort हमारा एक uncodified form of law है. नेक्स्ट, अब एक टर्म आई थी बीच में जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट मतलब टॉर्ट की डेफिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, तब एक टर्म यूज की थी मैंने जिसको मैंने डैमेजेस बोला था. अब ये डैमेजेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डैमेजेस? जनरल पार्लेंस में बोले तो डैमेजेस आर द कॉम्पेंसेशन. जनरल पार्लेंस में हम कॉम्पेंसेशन यूज करते हैं, लेकिन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड स्पेसिफिकली अंडर सिविल लॉ, in place of the compensation we use the term damages. तो damages क्या है? Damages are basically the compensation that is payable to the sufferer. अब sufferer को क्यों damages मिलती हैं? Because that person has been wronged by the wrongdoer. क्योंकि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है. किसके थ्रू वायलेशन हुआ है? बाय द टॉर्टफिएजर. अब उस पर्सन का जिसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, दैट पर्सन हैज अ राइट टू क्लेम डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट. क्योंकि जैसा मैंने बताया था जब हम सिविल लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिविल लॉ में क्या रेमेडी थी हमारी? सिविल लॉ में रेमेडी थी हमारी टू क्लेम कॉम्पेंसेशन. इसीलिए जब भी किसी के साथ कोई गलत काम हो रहा है या किसी के लीगल राइट का वायलेशन हो रहा है, स्पेशली अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, देन दैट पर्सन हैज अ राइट टू क्लेम damages. Now, damages are of two types. The first one is the liquidated one and the second one is the unliquidated. चलिए समझते हैं दोनों में डिफरेंस.
Liquidated damages basically are those damages that are predetermined or that can be calculated beforehand. एग्जाम्पल देती हूँ. लिक्विडेटेड डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी बाय एनी ऑफ द पार्टीज. ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए अ सूट इज फाइल्ड बेसिकली. So in that case, because all the terms and conditions are mentioned already in the contract, कि if any of the party is going to make a breach of the duty specifically mentioned under the contract, then that person has to pay that compensation. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होती हैं. नेक्स्ट आती है हमारी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसी डैमेजेस जो कि प्रीडिटरमाइंड नहीं होती हैं और वी कैन नॉट कैलकुलेटेड बिफोर हैंड. फॉर एग्जाम्पल, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, द डैमेजेस वी क्लेम हेयर आर अनलिक्विडेटेड इन नेचर. अनलिक्विडेटेड क्यों होती हैं? बिकॉज वी डोंट नो व्हाट डैमेज और व्हाट हार्म अ प्लेंटिफ इज गोइंग टू सफर, राइट? That's why under law of torts, the damages that are claimed are unliquidated in nature. अब एक बात समझते हैं, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी. सो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स को लाया गया इनटू पिक्चर बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, राइट? एंड ऑल्सो डैमेजेस क्यों ऑप्शन रखा? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, if my reputation has been tarnished by someone, can he or she restore my reputation back? No. So the only option left to restore myself to the position I was before is to claim compensation from the other person who has violated my right to reputation. ठीक है, समझ में आया? आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. ऐसे ही अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स में फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. सो आई होप यू ऑल लाइक द सेशन. थैंक यू. Hello and good evening from Energy Law Academy. So, today we are going to have a very interesting session on golden principles of appraisal of circumstantial evidences. Now, the first question that comes to our mind when we talk about this topic is what is appraisal of facts or what is appraisal of circumstantial evidence? Let's take an example. For example, somebody comes to you and says that you owe me 20,000 rupees. Are you simply going to give that person 20,000 rupees? No, you're not. What you're going to do is you're going to apply your mind and you're going to see कि क्या मैं उसको 20,000 rupees owe करता हूँ, क्या मैंने उससे 20,000 rupees लिए थे. All these things are to be considered. That is how it works when we talk about appraisal of facts or evidences. Relevant facts are admitted into the court of law, and when we admit the relevant facts in court of law, and after they are proved relevant facts, then what we are going to do is, then after the relevant facts are proved, then what we are going to do is apply our judicial mind. तो जो मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रेलेवेंट फैक्ट्स दैट वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और नॉट, वेदर द अक्यूज्ड शुड बी कन्विक्टेड और वेदर द अक्यूज्ड शुड बी acquitted, right? So all these things are to be considered while deciding the appraisal of facts, and this is what is called appraisal of circumstantial evidences. Now, अब circumstantial evidences क्या होते हैं?
सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस वो होते हैं जो एक एक्ट होता है, जो आपका कॉज ऑफ एक्शन होता है। जैसे सपोज ए ने बी का मर्डर किया, उसके सराउंडिंग जितने भी फैक्ट्स होंगे, जितने भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसे हमें डीएनए रिपोर्ट मिली, हमें फिंगरप्रिंट्स मिले, ए ने बी का मर्डर किया दिल्ली में, देन ही फ्लेड टू देहरादून, all these things are relevant facts and all these things are called as circumstantial facts, right? So now there are five golden principles of appraisal of circumstantial evidences. The very first and the most important of them all is facts to be proved beyond reasonable doubt. Now there is a very important judgment here to be seen. Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra. In this judgment, the court laid down these five golden principles of circumstantial evidences. These are also called punch shields of circumstantial evidences. This is a very, very famous question that has been asked in many judiciary exams, also in preliminary examination. So, the court in the Sharad Birdi Chand case said that facts have to be proved in such a manner that the guilt of the accused is proved beyond any reasonable doubt, that there is no doubt that the accused is guilty of the offense he is being accused of, right? Now, the second principle is that burden of proof upon a party who asserts a fact. Now, this is a principle that is also given in Section 103 of Indian Evidence Act. So, let's say we all know what general exceptions of IPC are. So, if I say that uh, I grievous hurt somebody or I hurt somebody in private defense, तो ये जो फैक्ट है कि जो मैंने एक्ट किया था वो प्राइवेट डिफेंस में किया था, वो कौन प्रूव करेगा? इफ आई एम असर्टिंग दैट आई हर्ट somebody or I stabbed somebody in case of private defense, then I am going to प्रूव दैट मेरा ये प्राइवेट डिफेंस का केस था, ना ही सिंपल एक स्टैबिंग का या ग्रीवियस हर्ट का केस था. सिमिलरली बर्डन ऑफ प्रूविंग कि सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यहाँ पे वैलिड है या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यहाँ पे वैलिड नहीं है, वो किसके ऊपर है? जो असर्ट कर रहा है फैक्ट में, जो ये फैक्ट को कोर्ट में लेकर आया है. This is also a principle that is given under Section 103 of Indian Evidence Act. Now, the next very important rule of circumstantial evidences is rule of best evidence. Again, let's take an example here. For example, you have a document that needs to be admitted in the court of law and that needs to be proved, right? अब वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, ओरिजिनल भी है और उसकी फोटोकॉपी भी है. तो अगर हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो हम फोटोकॉपी क्यों देंगे कोर्ट में? क्यों? क्योंकि व्हेन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी both are available, then the original document is the best evidence. Similarly, if somebody says that I personally saw A murder B, that is, he himself with his own eyes saw A murdering B, this is a best evidence. But if somebody says that I heard A say that B murdered C, ये क्या हो गया? Hearsay, सुनी सुनाई बातें. तो क्या ये वैलिड होती है? कुछ केसेस में ये भी बातें वैलिड होती है, बट जनरल रूल यही होता है कि हियर से एक्सक्लूडेड रहता है बेस्ट एविडेंस के केसेस में. सो दैट इज वाई जो भी आपके पास बेस्ट एविडेंस अवेलेबल होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज द एविडेंस दैट इज एडमिटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नो अदर हाइपोथेसिस अदर देन द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड. यहाँ पे क्या मतलब है? अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल और फोर्थ प्रिंसिपल काफी सिमिलर लग रहा है. क्यों? क्योंकि दोनों में वी आर सेइंग that the hypothesis or the result of all the investigation, of all the inquiry such be that there is no other way or there is no other hypothesis that is available other than the guilt of the accused. हम कह रहे हैं ए ने मर्डर किया है बी को, सारे सर्कमस्टांसेस, सारे डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग, evidences, witnesses are pointing towards only one and one thing, which is that A is guilty of murdering B. अगर कोई भी जरा सा भी there is any doubt that हो सकता है A ने मर्डर नहीं किया हो B में, तो ये it will directly lead to acquittal of A and not conviction of A, right? And now the last rule of or the last principle of appraisal of circumstantial evidence is accused right to be acquitted.
as we have said, that the guilt of the accused has to be proved in such a manner that there is no reasonable doubt. कोई भी डाउट ही नहीं है कि अक्यूज के अलावा किसी और ने कोई ऐसा एक्ट या मर्डर किया हो. तो अगर कोई डाउट है, देन व्हाट हैपेंस? इफ देयर इज एनी डाउट इन एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, then the accused has a right to get acquitted. Why? Because his guilt was not established beyond reasonable doubt, and there was findings, or there was lacks in findings of the court of law, which, let's say, maybe acquitted him or maybe convicted him, right? Now, as we said, the very important case and the very landmark judgment, that is Sharad Birdi Chand Sharda versus State of Maharashtra, it gave the 5 golden principles, and the Supreme Court, our Honorable Supreme Court, said that the circumstances should be fully established in such a manner that there is no doubt that there could be any other person or there could be any other way to kill the accused other than what we are inferring or what we are coming with the to the court of law. Now, this case of Sharad Birdi Chand was reiterated very recently, as recent as day before yesterday, in the Supreme Court in the case of Lakshman Prasad versus State of Madhya Pradesh 2023 Supreme Court. So, the Supreme Court, while reiterating the principles of Sharad Birdi Chand, said that there should be no doubt and that the guilt of the accused should be established in such a way that there is no space and there is no value for any other theory of crime, right? And considering the principles given by this case, the court in this case, Supreme Court in this case, set aside the life sentence of an accused in a murder case. यहाँ पे क्या हुआ था? हाई कोर्ट ने अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया मर्डर के लिए, but there were some loopholes or there were some lackings in the findings of the High Court, which the Supreme Court thought that there should not be any lackings in the findings of the High Court, which is why the Supreme Court ultimately acquitted the accused and said that the life sentence should be set aside permanently or indefinitely, right? Now, there's another important judgment here, which is Devilal Bapulal versus State of Rajasthan. This is a very, very important principle here that we are going to discuss. So, here the Supreme Court said that the duty of prosecution to evaluate from maybe to must be true. As we said, that Section 103 of Indian Evidence Act says that the guilt of the accused should be such, and that any person who is asserting the fact is the person on whom the burden of proof will be there. तो burden of proof मेरे ऊपर है, तो prosecution जो है, prosecution की ये ड्यूटी बनती है that he changes the maybe, कि शायद हो सकता है ए ने मर्डर किया हो बी का, to must be true, कि पक्का ऐसा ही है कि ए ने ही मर्डर किया है बी का. क्यों? क्योंकि और कोई रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या और कोई सिनेरियो बन ही नहीं रहा है अदर देन वी सेइंग दैट ए इज मर्डरिंग और ए हैज मर्डर्ड बी, right? So I hope you all have understood what we are trying to say here, and stay tuned. We are going to come up with very, very interesting sessions very, very soon. And now Prakresh sir is going to take a very interesting session on IP Mat and Cat. And thank you so much. Hello and welcome to today's session. My name is Prakresh Avasthi and I am your instructor for today's class. In today's class, we will be discussing about the Common Admission Test, which is also known as the CAT.
So basically, CAT is nothing but a management aptitude test which is being taken by the prestigious IIMs. It is being conducted to evaluate and shortlist the candidates for the postgraduate program. तो कैट क्या है? कैट बेसिकली एमबीए में एडमिशन लेने के लिए बेसिक मेनली आईएम्स और जो अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो हम एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसको कॉमन एडमिशन टेस्ट या कैट बोलते हैं. कैट इज अ प्रिलिमिनरी स्टेज. कैट क्लियर करने के बाद ही हम लोग सेकेंड स्टेज में जाते हैं. सेकेंड स्टेज क्या है कि उसके बाद कैट के स्कोर कार्ड बेसिस पे और आपकी परफॉर्मेंस जो प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर आपकी कॉल आती है IIMs and other prestigious institutions like Faculty of Management Studies, Delhi Universities, institutions like IIT Delhi, IIT Bombay, and others also do accept the CAT examination scorecard. Then there are institutions like NITI, there are institutions like ISC, Bangalore, which has recently started its M management program. It also accepts the CAT examination scorecard, right? So CAT examination scorecard is widely being accepted and is a very prestigious exam in India. Now discussing further, we will be discussing about the exam pattern and the syllabus. The exam is being conducted in the computer mode. So computer पे exam होता है. The duration of the exam is 120 minutes. और 120 minutes में 3 sections होते हैं. कौन से 3 sections होते हैं? First one is the verbal ability and reading comprehension. Verbal ability and reading comprehensions में क्या क्या आता है? One is the paragraph, 2-3 paragraphs are being given, and then the questions are being asked on the basis of these paragraphs. So that is one type of questions which are being, or one type of section which is being asked in the verbal ability and reading comprehension section. Then the another one is nothing but parajumbles. Parajumbles, the 4 and 5 options are given, and if you arrange these options in the right manner, right sequence में आपने arrange किया तो एक meaningful passage बन जाएगा, एक meaningful paragraph बन जाएगा. तो basically it tests your grammar, your analytical skills, your understanding and others. तो parajumbles आते हैं. So thirdly, there are odd sentences. They are there to check your grammar and other English related knowledge. Now second section is logical reasoning and data interpretation. Data interpretation में क्या करते हैं? 2 pattern changes. There are 4 to 5 questions are there and एक data दिया रहता है. Data can be in the form of bar, it can be form of rectangles, it can be form of pie chart and other forms. कुछ साल पहले data was represented also in an hexagonal form. तो data दिया रहता है and on the basis of that data there are 4 to 5 questions which are being asked on the basis of that data. One has to attempt that. In the logical reasoning section, questions on syllogism, questions on blood relations, questions on the sitting arrangement, puzzles and etc. are being asked. थर्ड सेक्शन क्या हुआ? थर्ड सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी बोल सकते हैं. तो मैथ्स के सेक्शन में मोस्टली अर्थमेटिक, अलजेब्रा, आपका ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स, और उसमें भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी. ये 4 से 5 टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किन सब टॉपिक्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कैट एग्जाम पैटर्न में. So then if we analyze the previous year papers and previous year pattern, then the CAT exam was conducted in 3 slots: morning, afternoon and evening. Mostly the exam is being conducted on 4th week of November. So last year 27th November के आसपास conduct हुआ था. Though the glossary is not out yet for the upcoming CAT exam, but we can hope
from the previous trend that this year also the CAT examination will be conducted on 4th week of November 2023. This in last year's paper, there were 66 questions, and 66 question total marks were 198. So about 200 marks का पेपर आ रहा है, 66 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? लगभग आपके 24 क्वेश्चंस वीआरसी सेक्शन में है, एलआरडीआई में 22 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन क्वांट. ये थोड़ा वेरी करता रहता है, 22-20 ऐसे वेरी करता रहता है. तो 66 क्वेश्चन के करीब आ रहे हैं अभी. पेपर का मोड जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश में ही पेपर आता है. What are there are two types of questions are being asked nowadays in CAT. Earlier it was not there, but nowadays CAT में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. One is MCQ based, another one is non-MCQ based. Non-MCQ based questions में क्या करना होता है कि आपके स्क्रीन पे ही एक बॉक्स बना होता है and we have to input our answer in that box using the keyboard which is giving on your screen. स्क्रीन पे जो कीवर्ड दिया हुआ है उसी की मदद से आपको वहां आंसर टाइप करना होता है. वो उसको हम टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बोलते हैं. इस प्रकार के क्वेश्चंस में बेनिफिट ये है कि यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द नेगेटिव मार्किंग. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर टीटा टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस we can see that there are 4 options are being given and we have to choose the right one. And 4 options may say if you give the right answer then you will get the 3 marks plus 3 marks, and if you have given the wrong answer then -1 will be deducted. So there is -1/3 of the negative marking. So this is about the exam pattern and syllabus. Syllabus we discussed reading comprehension, para jumbles, and then sentence out, then others, then the logical reasoning, data interpretations also we discussed, and we discussed about the quantitative aptitude also. Now we will move towards the pattern or the weightage of certain topics in last year's CAT examination. You can see on your screen that on the this left side one pie chart is given. This pie chart represents the weightage of various topics in the quant section. So if we clearly see this grayish portion, which is corresponding 45%, this corresponds to arithmetic. मतलब 45% के जो बराबर वेटेज था लास्ट ईयर वो लगभग अर्थमेटिक का था. 40 to 45% वेटेज लास्ट ईयर अर्थमेटिक्स का ही था. Next was the algebra, which was about 23% or 20 to 25%. This varies, but overall the pattern does not change. The weightage do change, but it is not a major change. So हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें 45 plus 23, and if you focus on arithmetic and algebra and you achieve a very good accuracy in that, it is a surety, and of course I can say that with a high confidence being appeared in the CAT examination itself, that you can score a very good percentile. Though there is also, you have to go with the geometry also, with the probability also, with the binomial theorems also, which these subtopics again comes into the topics which we have discussed. So we have to good at that. So if you are good in arithmetic and algebra, and even if you are good in geometry also, so that is also an added advantage. It means nowhere you are above 95%, I can say. Now on the right side we can see one of the pie chart which represents the weightage in verbal ability and reading comprehension section. In this it shows the importance of the reading comprehension. And that's why one of the main idea why I have given this pie chart, because I want to emphasize that during the preparation of the examinations like CAT, we need not to study the whole universe. We need to very particular focused
we need very particular and focused study, and we need to analyze the previous year's stand, and emphasis has to be given to those topics which are again and again repeating in the CAT examination. That is one of the very important things, because if you will study the whole universe, you are nowhere. Wide कवरेज है, क्वांट में भी, मैथ्स में भी वाइड है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन का भी सिलेबस अगर देखें तो वो भी वाइड है, वर्बल एबिलिटी मतलब विच इज आल्सो नोन एज द इंग्लिश, तो इंग्लिश का भी सिलेबस वाइड है. हमको फोकस्ड अप्रोच रखनी है. तो फोकस्ड अप्रोच प्रिपरेशन से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे काम का है, या फिर हम इसको नेगेशन में बोल सकते हैं, क्या हमारे काम का नहीं है. वाइल प्रिपरेशन, फॉर एग्जाम्पल एसएससी में हो सकता है कि क्वेश्चंस आ रहे हों आपके इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन पे, प्रोनाउंस पे, वर्ब पे, बट इन कैट एग्जामिनेशन not much questions are being directly asked on the verbs and pronouns and something like that. तो हमको ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस ना करके हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा. दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, एंड that will fetch us a ranking, or I will say a good percentile in the CAT. So that's why I am emphasizing that through a pie chart. So 67% the weightage reading comprehension का हो गया. If you combine the weightage of para jumbles, which one can say is nothing, but we can say it is nothing but the related component of the reading comprehension. Why? Because it is both, whether the reading comprehension or the para jumble, both checks your not only the comprehending skills but also the analytical skills, your English, and your understanding about the subject. The exam is also about the efficiency and accuracy. So these are checking your skills of efficiency and accuracy. तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, which is close to I think 80% सिलेबस तो यहीं से हो गया. और अगर इसमें आपने अच्छा कर लिया तो more than 95% you can again expect. So this is what about the VARC and con section. And now you got the idea why when we are discussing about the CAT examination, we are saying that reading comprehension is gateway to your good percentile. इसी अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, टिप्स जब पढ़ेंगे यहीं से आएगा कि क्यों बार बार हर कोई बोलता है कि you have to read more, you have to read newspaper, you have to read various editorials, various magazines and other things, and do the mocks and do the practice religiously. तो इसका आंसर यहीं से आता है कि 67% जो वेटेज है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही है. अगर 67% में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 90-95% एक्यूरेसी से कर लिया, जो पॉसिबल है, उससे ज्यादा एक्यूरेसी से भी पॉसिबल है, तो अगर वो आपने कर लिया, इसका मतलब यू आर वेरी गुड एट बीएस एंड यू विल गेट अ गुड परसेंटाइल इन दैट. नाउ after this we will be discussing somewhat about what are the career options after one pass out from the IIMs or what does the MBA. किस प्रकार की जॉब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं जब आप कैट स्कोर कार्ड मतलब कैट में अच्छा गुड परसेंटाइल लाने के बाद आप अपना पर्सनल इंटरव्यू भी अच्छे से फेस करने के बाद आपको कॉल लेटर आता है IIM से, तो व्हाट काइंड ऑफ जॉब एक्सपेक्टेशंस you must have, or what kind of job roles you will get after you will pass out the MBA, right? So first one is the sales and marketing jobs. You must be knowing about HUL, companies like HUL, right? These companies hire the management students for managing their brand, for branding, for sales and other activities. In nut short, we can say that sales is everywhere. So you will be basically managing a brand, right? And in subsequent years, you may become a brand manager and then reach up to a higher verticals, higher heights also, senior positions.
तो सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब्स में आपको सेल्स को बढ़ाना है, मार्केटिंग को बूस्ट करना चाहिए, ग्रोथ कैसे लाएं, कैसे एक प्रोडक्ट को हम देखते हैं ना, अपने जो टीवी एड्स आते हैं उनके थ्रू हम देखते हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स चलती हैं, तो उन सबको डिजाइन कैसे किया जाए, कैसे कस्टमर को हिट किया जाए, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए थ्रू दी मार्केटिंग, और कैसे सेल्स को बूस्ट किया जाए, इस प्रकार की जॉब्स आती हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में. हाईली पेइंग जॉब, हाई पेइंग जॉब है ये, एंड समवॉट ऑल्सो ये वन लर्न्स एंड लॉट, और हर फील्ड में डिमांड में. हर फील्ड मतलब हर किसी को चाहिए, whether it is a soap making company or whether it is a salt making company or whether it is a ad tech company, all are doing some kind of marketing, right? Then next comes the human resource job. Human resource job में the basic purpose of human resource job is to optimize the human capital. Human capital का best उपयोग for the benefit of the company, कि employee का किस प्रकार का उसका जो potential है उसका बेस्ट उपयोग कैसे किया जाए ताकि कंपनीज की ग्रोथ मैक्सिमम हो, वो ह्यूमन रिसोर्स जॉब्स में होती है. सो you will be one which will be budgeting the budget for the budgeting the hiring budget. You will be selecting the hiring budget. You will be selecting what will be the means everybody's what kind of appraisal or percentage of appraisal you will give to various peoples. कंपनीज डिफाइन करती है ना कि इस बार 5% अप्रेजल दिया जाएगा, इस बार 10% अप्रेजल दिया जाएगा, तो ये ऑलरेडी आप डिफाइन करेंगे. फिर आप पॉलिसी मेकिंग में भी होंगे, राइट? इफ यू आर पास आउट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM रांची एंड अदर्स, एक्सेलराई, और इनसे पास आउट होते हैं तो आप डायरेक्टली टॉप MNCs में पॉलिसी मेकिंग में भी जा सकते हैं, कि पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली जाएंगे कि बेस्ट यूज पॉलिसी को कैसे चेंज करना है फॉर मतलब पॉलिसी रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स को कैसे चेंज करना है टू ऑप्टिमाइज द ह्यूमन पोटेंशियल. that one will get in human resource job. Then comes the business analytics job. This job is something newer in the sense it is a very data driven job. One has to analyze the data. जो भी आपको डेटा डाल रहा है, आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर जगह डेटा है, तो डेटा को आपको एनालाइज करना है, उस डेटा को एनालाइज करके एक पैटर्न को प्रेडिक्ट करना है, एंड आफ्टर गेटिंग द पैटर्न one has to guide the company in its future growth. कि कौन सा पाथ लेना चाहिए, किस पाथ पे जाना चाहिए, कंपनी को किस पे फोकस करना चाहिए, डेटा के हिसाब से किस प्रोडक्ट पे फोकस, किस स्ट्रेटजी पे फोकस कर. दैट इज व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डू. Recently, IIM Bangalore has started a 2-year separate MBA program related to your business analytics. A data-driven job which is high in demand, and future में इसकी डिमांड और बढ़ती जाएगी क्योंकि डेटा का धीरे धीरे उपयोग बढ़ता जा रहा है. Data driven decisions are being taken now and they are being in demand, so that's why it will increase. Then there are retail management jobs. DMart है, बिग बाजार है, रिटेल कीपर्स हैं, तो इनमें भी आप जॉब कर सकते हैं, कैसे मैनेज करना. Then there are finance jobs. Finance jobs, you may be working as finance analyst and other positions in various mutual fund houses, investment banking, various other banking, wealth managers and others. So that is finance jobs. Then IT and systems job. IT systems job, companies आपने सुनी होंगी, Infosys, then Wipro, TCS, then we have the Microsoft, Google. All these hire the MBA graduates for their management roles. They hire the MBA graduates for their management roles, and then they give them the senior positions also. They offer them good salary and other perks. You must be knowing, recently one of the graduate was, after her MBA, she got a package of more than 70 lakhs in the Microsoft. From Microsoft, she had secured a package of more than 70 lakhs, and that is in Indian terms. Our office will be in Bangalore, so we will be joining Bangalore at 70 lakh package. Then the
operations job, managing the operations of the company, managing the numbers of the company, उसमें आप जॉब कर सकते हैं. फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट जॉब्स हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट जॉब्स आर देयर, लाइक we have the logistical analyst, logistical managers, and other senior positions. Companies like delivery. Then we have the companies like DHL and others also have the management graduates for managing their affairs, right? तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं. So these are some of the jobs, not the all, because the range is wide, and with increase in the specialization and with increase in the new emerging market, one may have different roles also. तो आप कंपनी को आप इसी से रिलेटेड हैं तो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तरह किसी कंपनी में मैकेंजी या उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. आप प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर को ज्वाइन कर सकते हैं किसी कंपनी में. तो ये डिफरेंट रोल्स जो होंगे आपके होंगे. MBA इज वेरी प्रेस्टिजियस डिग्री एंड हेल्ड इन हाई स्टीम ऑल ओवर वर्ल्ड. आप चाहे यूएस चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, MBA ग्रेजुएट्स को हाई स्टीम में देखा जाता है एंड दे गेट अ गुड सैलरी ऑल्सो. प्रेस्टीज भी आती है, तो इसलिए one goes for the MBA also. So these are some of the options which one gets after MBA. Now there are certain preparation tips I want to give you while you are preparing for the CAT. See, while we are preparing for the CAT, because verbal ability and reading comprehension section में reading comprehension का importance लगभग 70% है. So we have to build an habit of reading newspaper daily. One English newspaper, and this one English newspaper can be, I think, it can be The Hindu, it can be Indian Express, it can be The Mint, it can be any Times of India, anyone. People say The Hindu पढ़ना चाहिए, या वो आपको जो सही लगे वो. पर्पज ये है कि एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो. रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिटिकल स्किल्स वो अपने आप इंप्रूव होना चालू कर देंगे. आपकी वोकैबुलरी वो अपने आप इंप्रूव. तो जो भी न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता हो, जो न्यूज़पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो, जिस जगह में आप रह रहे हैं, हो सकता है द हिंदू जैसे उसका स्प्रेड बहुत कम है. इवन द सिटीज लाइक भिलाई एंड अदर्स, you will not get The Hindu very easily, क्योंकि एक तो रीडर्स कम है वहाँ, उसका स्प्रेड कम है. तो वो अगर आप उन रीजन्स में रह रहे हैं तो आप दूसरा पेपर ले सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं. nowadays ऑनलाइन, सो ऑनलाइन, ऑफलाइन, whichever newspaper one likes, that newspaper one can read, but read daily. एंड उसमें भी स्पेशल फोकस किस पे देना है? स्पेशल फोकस देना है एडिटोरियल्स पे. जो आप एडिटोरियल सेक्शन होता है उसमें जाएं, उस पर आप विशेष फोकस दें. एंड इफ यू आर न्यू कमर, बिगिनर, देन ट्राई टू राइट दिस इन द समरी. जो भी आपने एडिटोरियल पढ़ा है उसकी एक समरी अपने मन में बनाने की कोशिश करें. और या आप समय है आपके पास, अभी आप नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं या अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी भी समय है, तो आप स्टार्ट राइटिंग दैट इन अ वाइट पेपर. उसमें स्टार्ट राइटिंग, यू विल डेवलप योर स्किल्स. फिर आता है कि दूसरा क्या करना है. दूसरा जहां स्टूडेंट्स बहुत मेक करते हैं, एनालाइज प्रीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. क्वेश्चंस रिपीट होंगे नहीं रिपीट होंगे, दैट इज नॉट आवर जॉब. वी आर नॉट एनालाइजिंग द PYQ फॉर द रिपीटिशन, कि वहां से कोई क्वेश्चन पता भी चल जाएगा 2 मार्क्स का तो कोई, दैट इज नॉट श्योर शॉट दैट यू विल हिट इट, बिकॉज वहां प्रेशर भी होता है और होता है. मेन पर्पज है आपको वो पता चलेगा कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है. जिससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको हम कल कम एम्फेसिस देंगे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है. टुडे इज जून 22, एग्जाम लगभग 26-27 नवंबर के करीब होगा. तो यू कैन कैलकुलेट हाउ मच मंथ्स वी डू हैव. तो इसलिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी भी अपनी, एंड इंडिविजुअलिस्टिक स्ट्रेटजी वो करनी होगी. फिर उसके बाद एक रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट. जरूरी नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं और फिर 2 दिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा मेरे अनुसार. यू मस्ट बी रेगुलर इन योर प्रैक्टिस एंड गिव रेगुलर मॉक टेस्ट. रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए,
रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए, रेगुलर क्लासेस कीजिए. आपका जो सेक्शन वीक है आप आके गाइडेंस ले सकते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग द गाइडेंस. वी आल्सो डू प्रोवाइड द गाइडेंस. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो आप हमसे गाइडेंस हमारे पास आ सकते हैं. वी हैव दी आवर पीपल which will help you in starting your journey and in guiding your journey. तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए और फिर वहां पे आप अपने आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या आपके वीक एरियाज हैं. वीक एरियाज को एक पेपर में लिख लीजिए, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन एंड देन फोकस ऑन दैट. One thing which I want to means emphasize here, which many aspirants do not emphasize while during the preparation, is the build and knowledge about current affairs. See, CAT is an scorecard. After CAT, one has to means CAT is a preliminary stage. After CAT, one has to face the we can say the personal interview round also. और पर्सनल इंटरव्यू राउंड में वहां पे आपसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव द नॉलेज, समथिंग नॉलेज अबाउट योर एनवायरनमेंट, योर सराउंडिंग. बट when you are particularly preparing for the prestigious examination, then you must know about the current affairs. And कुछ तो एग्जाम्स में जैसे कि IIFT में तो करंट अफेयर्स आता ही है, तो वहां आपको हेल्प करेगा. तो बिकॉज इन लास्ट यू विल फील द heat of the movement, you will feel pressurized, so it's better while reading the newspaper just glance through the current affairs, क्या हो रहा है around, उसको एक build करना चालू कर दिए. And that's those kind of questions may be asked. For example, I will share my own experience. When I was giving the interview, I was facing the interview for IIMS. वहां पर मेरे से जो क्वेश्चन पूछे गए वो पॉलिटी और आपके करंट अफेयर उसी से पूछे गए, और कोई पूछा ही नहीं है. देयर वाज नथिंग लाइक माय बैकग्राउंड, देयर वाज नथिंग लाइक क्वेश्चंस लाइक माय एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज, एनीथिंग लाइक दैट नॉट वाज. या तो पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल से पूछे गए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी क्यों है, कितने मेंबर्स, समथिंग लाइक दैट वाज बीइंग आस्क्ड. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आप एक कंटिन्यूअस जर्नी, एक कंटिन्यूअस रिसोर्स ऑफ नॉलेज अपने अंदर एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो इसलिए स्टार्ट रीडिंग वाइडर. और जब आप ये करेंगे तो ऑलरेडी आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो आपकी नॉलेज है वो भी बढ़ेगी, प्लस आपकी जो स्पीड है